इस वीडियो में हम indeterminate frames को एनालाइज करेंगे by using force method. So let's start. Before starting to applying the method, we will first see what are the objectives of this video. What are we going to cover in this video? हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. Number 1, हम इसमें मेथड सीखना चाह रहे हैं, लर्न द मेथड. सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये गर्डर और ये कॉलम, इनकी रिलेटिव स्टिफनेस, अगर इसकी रिलेटिव स्टिफनेस को मैं आर जी कह दूँ, यानी आई जी ओवर एल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्पैन, एल लेंथ ऑफ दिस गर्डर, ठीक है. और कॉलम की रिलेटिव स्टिफनेस को अगर मैं आर सी कह दूँ, यानी आई सी ओवर एच, एच इज़ द हाइट ऑफ द कॉलम, तो ये जो रेशो होगी effect of RG over RC, effect of RG over RC on bending moment distribution. Thirdly हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंड्स की जो फिक्सिटी है, ठीक है. अगर ये इस तरह से है, फिक्स्ड है 100%, और अगर ये दोनों पिंड हैं, सिर्फ मोमेंट रिलीज हो रहा है, तो फिर उस केस में हाउ डज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वुड वेरी. यानी effect of base, this is the base, all right, base, effect of base fixity on bending moment distribution. So first of all, general approach. So let's consider a frame of any arbitrary shape. This is a hinge support, this is another hinge support. Let's call it A, B, C and D. Now whatever loading is applied, we are going to consider a redundant over here. So we will consider the primary structure like this. So this will become a roller, and we will consider a redundant over here. Let's represent it by x1. And we will also consider a displacement measure delta 1 using again this basic approach, delta 1 naught plus small delta 1 1 x1 equal to delta 1. Delta 1 is, you know, the one, it is in the actual structure. So if it is 0, you will put it equal to 0. Otherwise, whatever is the actual value, you will put that value. This is, you know, the displacement in the primary structure. This is our primary structure when you apply the external loading. Displacement in the primary structure due to external loading. And this term, you know, it is displacement in the primary structure, but this is due to unit value of x1. So you have been using this equation for beams and for arches as well, so I hope by now you're familiar with this. So it comes down to finding delta 1 naught and delta 1 1. So you will be using the method of virtual forces, neglecting the shear transformation, shear deformations. If we neglect shear deformation, and then we can write down this principle as this: d delta p equal to summation integral m over ei delta m plus f over ei delta f ds, integral all over this span or all over the length of each member, profile of each member, and you do this for all members. All right, so let's talk about the parameters involved. This is the displacement that you want to find, required displacement. This is something that you want to find, required displacement, and this we will take equal to 1, and you know, this is due to the real loading,
and this one is due to the unit virtual load, and this is again also due to real loading, and this is due to unit virtual load. So the rest is simple. This is EI, flexural rigidity of the member. AI is the axial rigidity of the member, and this S represents distance along the profile of the member. If it is a straight member, it will be a straight distance, and otherwise it follows the profile of the member. So this is the general expression, but often you can neglect this part. So this term is considered equal to 0 for non-shallow frames. So we will be neglecting this term, this axial term. Okay, so this term would be considered equal to 0, and we will be considering only the deformations due to bending moment. So this would reduce our formula to this for all members. So we'll use this formula for determining the displacements. So coming back to our equation, compatibility equation, you can see in this equation we have two displacements to determine this delta 1 naught and small delta 1 1. Now this delta 1 naught is, let's talk about this one first. Delta 1, small delta 1 1. This is independent of the external loading. So it only depends upon the geometry of the frame. So it's independent of the external loading, and for each different type of loading you need to determine this delta 1 knots. So as far as the geometry and the support conditions remain the same, as those conditions do not change, you do not need to calculate this for every different type of loading. You only need to calculate this term delta 1 naught. It depends on the external loading. So if you rewrite this equation, you can write it down as x1 equal to minus delta 1 naught over delta 1 1. So this equation would give you the unknown force x1. Now if you consider a frame which has both ends fixed, then this frame is indeterminate to the third degree. So we have three unknown forces to be considered as redundant. So in that case, what you can do is you can will remove this support completely, and then you will consider three unknown force, three redundants acting over here. Let's call those redundants as maybe x1, and correspondingly for this x1 you will have a displacement measure in this direction, horizontal direction, delta 1. Similarly we will have x2 and accordingly delta 2, and similarly we will have a moment over here, let's call it x3, and the rotation along this moment as delta 3. So, and this is that point D. So you will have to work with these three redundants. So instead of a single equation this time, we will have a system of three equations which we can represent in the matrix form as this: delta 1 naught plus small delta x equal to delta 1. Now these are all matrices. So this is the flexibility matrix, and this is also a matrix, this is also a matrix, and this is also a matrix. So you could put
assemble over here to distinguish it, to tell that these are, all matrices. You may put a bar underneath them like this, all right, to tell that these are matrices and not just single variables, so not just one quantity. Now, as frames could be classified as, based on geometry, you can classify them as portal frames and gable frames. These are also called as pitched roof frames. So, these are the portal frames and these are the gable frames. So we will be discussing in this course only portal frames. So we will be discussing only portal frames from now onward in this video. So portal frames is our next topic. So we are down to a specific type of frames, which are portal frames. So if you consider a frame of this shape with a hinge support over here and another hinge support over here, and if you consider different moments of inertia, I1 for the columns and I2 for the girder. So this is the given frame, and now we're going to consider a redundant over here. So we will redraw this frame and we will replace this hinge with a roller support. And so this is the same frame, and now I'm going to change this, replace this with a roller support. So this is going to be a roller support, all right, and we will have this redundant considered over here. X1 delta 1 is the displacement measure along this. So this is that direction that we have taken as redundant. और अब हम इसमें further ये करेंगे कि next अब इसमें हमने चूँकि we haven't considered any specific external loading. We have just considered any frame, its geometry, its moments of inertia of different members, different heights, H1, H2, and we have just shown the supports. So of course one thing is clear, we will have to consider a redundant over here, and next what we need to do is apply external loading to this primary structure and then consider a unit value of x1 and apply it right here. So and then you need to determine displacement at D in horizontal direction, in the direction of x1. So we're going to do that first, which is something independent of the applied loading, of the external loading. So we will be considering next a unit value of x1. So in this case we're going to apply just a unit value of x1, and so we'll need to first find out the reactions. So if this is x1 equal to 1, on this hinge support will develop reaction equal to 1. So without naming it, I'm just writing down the reaction x, and then there will be two opposite and equal reactions developed over here, because you know that under the action of this x1 equal to 1 and this unit load, this is the reaction 1, there will be some net moment which will be equal to 1 multiplied by distance between the difference of H2 and H1. So this is the lever arm. Let me show the lever arm. This is the lever arm, this distance H2 minus H1. So these two forces are responsible for generating an opposite couple which can resist the moment of H2 minus H1. So what should be their value? Their value should be H2 minus H1 over L, and this should also be the same
but of course in the opposite direction. You have found the reactions. अब आप next क्या करेंगे? अब आप इसकी bending moment distribution की equations लिखेंगे for all members of the frame. So maybe we can start with member AB. मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. एक मैं आपके साथ डिटेल में कर लेता हूँ, बाकी आप खुद फिर बाद में कर लीजिएगा. So we will draw this member AB, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये x1 है, ठीक है. यहाँ पे एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ 1 लिख लेते हैं. और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शंस जो पॉसिबली डेवलप हो सकते हैं वो ये डेवलप हो सकता है, और एक ये डेवलप होगा, और जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो बेसिकली ये मोमेंट है, इसको हम m स्मॉल डेल्टा m1 कह देते हैं. हम इसको डेल्टा एस मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया कि ये मैं वर्चुअल के लिए कर रहा हूँ, यानी सॉरी वर्चुअल कह रहा हूँ, बेसिकली वर्चुअल नहीं है, ये वर्चुअल नहीं है, मैं इसको रियल लोडिंग के लिए कर रहा हूँ. लेकिन क्योंकि आगे जाके आपको पता है कि ये भी यही हमारा रियल लोड जो है वो हमारा वर्चुअल लोड के तौर, यही रिजल्ट्स हमने वर्चुअल के लिए भी यूज़ करने होते हैं, इसलिए मैं इसके साथ स्मॉल डेल्टा m1 का सैम्पल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. ऑल दो राइट नाउ ये मैं रियल के लिए कर रहा हूँ. वर्चुअल भी चूँकि इसी तरह ही होना था, तो आप इसको जो भी कहना चाहें कि ये वर्चुअल का मैं कर रहा हूँ या रियल का कर रहा हूँ, रिजल्ट्स एक जैसे आने थे. ये मेरा डेल्टा m1. अब मैंने इसकी इक्वेशन लिखनी थी. अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि हम फ्रेम के अंदर जो पॉजिटिव बेंडिंग है बीम में, तो आपको पता है कि बीम में हम ये पॉजिटिव बेंडिंग लेते रहे हैं, यानी ये जो इस तरह की लोडिंग होगी, ये जो डायरेक्शन है मोमेंट की ये वाली, इस डायरेक्शन से ये होगा कि इस डायरेक्शन से जो प्रोड्यूस होंगी स्ट्रेसेस वो इस तरह से होंगी प्रोड्यूस के ऊपर जो है कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, इस तरफ कंप्रेशन, और इस तरफ जो है वो टेंशन प्रोड्यूस होगी. तो अगर आप बीम में देखें तो पॉजिटिव जो लोडिंग है, पॉजिटिव जो बेंडिंग मोमेंट है जिसको हम सैगिंग भी बोलते हैं, इट प्रोड्यूसेस कंप्रेशन ऑन दी आउटर साइड, ठीक है. अब ये कंप्रेशन आउटर साइड पे प्रोड्यूस करते हैं. तो फ्रेम में हमारी जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि जो मोमेंट इस आउटर वाली साइड पे कंप्रेशन प्रोड्यूस करे उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काटता हूँ, जैसे मैंने ये कंसिडर किया हुआ है, तो मेरे पास ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, इसमें मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा. ऐसे ही जैसे अगर मैं बीम में काटूँ तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं, अगर मैं यहाँ काटूँगा इसी तरह, अब मैं इसमें ये इन दोनों केसेस में अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, वैसे तो मैकेनिक्स मटेरियल में आप पढ़ चुके हैं इसको, तो ये जो एरो है ये आपका यानी जो मेंबर है, जैसे ये मेंबर है, इसमें बाहर वाली साइड के साथ इसको ऐसे टच होना चाहिए, मतलब इस तरह से लगना चाहिए इसको, ठीक है, जैसे ये भी लग रहा है बाहर वाली साइड के साथ, ठीक है. अगर ये मैं थोड़ा सा ये थिकनेस भी ड्रॉ कर दूं तो ये इस तरह से, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये ऐसे, ये वाला यानी बाहर वाली साइड के साथ एरो, यानी बाहर वाली साइड पे वो ये जब लोग बेंड करेगा, अगर मैं दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर दूं, सॉरी इस तरह से, तो अब ये जब इसको बेंड करेगा तो ये इस तरह से बेंड होगा, यानी सॉरी इसकी बेंड शेप कुछ इस तरह से बनेगी कि ये ऐसे करके बेंड होगा इस साइड पे. सॉरी मैंने ड्रॉ इतना सही नहीं किया, इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ, इस ड्राइंग को कलर चेंज कर लेते हैं. जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है. ऐसे ये वाली साइड, इस साइड पे टेंशन प्रोड्यूस होगी अंदर वाली साइड पे, और ये बाहर वाली साइड पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है. ये इसलिए हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं. जैसे बीम में ये बाहर वाली साइड पे कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी बेस पे हम फ्रेम में भी हमारे यही साइन कन्वेंशन है, ठीक हो गया. ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने ये इसको इस डायरेक्शन में क्यों ड्रॉ किया है.
ये मेरी पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। अच्छा, मैंने डेल्टा m1 को इस डायरेक्शन में शो कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 इंटू x1। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, 1 इंटू x1 ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और अब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करेंगे तो ऐसी इक्वेशन बनती है 1 प्लस डेल्टा m1 सॉरी 1 इंटू x1 प्लस स्मॉल डेल्टा m1 इक्वल टू 0। अगर आप समेशन कंसिडर कर लें अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप जो भी नाम देना चाहें, मैं इसको ऐसे ही कोई नाम दे देता हूँ, जे पॉइंट कह देता हूँ, कोई भी पॉइंट कह सकता था। इसके अबाउट जब समेशन कंसिडर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा m1 इज़ इक्वल टू -x1। तो ये मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ से लिया। आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड दिस माइनर थिंग्स, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, ये सारा, और लेट मी फोकस ऑन माई प्रॉब्लम। ये है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ये स्मॉल डेल्टा m1 ये हमने कर लिया है। और नेक्स्ट अब हमने, और इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि दिस डेल्टा m1 इज़ इक्वल टू -x1, एंड यू नो दैट x1 goes from 0 to h1, and next we are going to consider